We have, in fact, breaking updates now coming in. There's a lot of intrigue around the blast. Now, the initial suspicion was that it was a crude bomb. The police officials who will invoke Explosives Act, and sources say that the NSG bomb squad has also been called in. Remember, the explosion took place at the CRPF school in Delhi's Rohini. A call was made to the Delhi police this morning. And look at the damage that you're seeing on the screens. The school's wall has suffered damage. There have been no casualties or injuries that have been reported, but forensic teams and officers of the Delhi Police Special Cell have reached the spot and are trying to identify the cause of the blast. My colleague Priyank Tripathi joins us on the broadcast with the details. Priyank, what are the details? We understand the forensic team, the Delhi Police Special Cell, has also reached the spot and they're trying to ascertain the cause of the blast. Any reason or any information coming in this regard? See, Pratibha, the Delhi police team has sent several ATS units to the location, looking at the explosion visuals which we brought for viewers early in the morning, which showed that, the smoke was coming out from this particular main stretch of the road. But after analysis, it's quite clear that the impact of the blast was more than observed more than 40 feet away from the location. The blast actually happened right next to the wall of this particular CRPF school, but there were shops which were on the opposite carriageway, which were approximately around 40 feet away from the location, and the boards and the glasses were broken because of this huge explosion which happened. What sources have been suggesting that they have found white color chemical on the walls, which is certainly suggestive about the fact that they could have been a crude bomb which exploded. But this kind of impact was heard from kilometers of distance, which clearly shows that it could have been a crude bomb. Since the Delhi police also can get assistance of the NSG's BDS team, which is the best BDS team in the country, which is stationed in the NCR region only. So they have also been requested to come and analyze the situation on the ground and find the chemical which could have been used for making this particular crude bomb, which is the initial investigation is suggesting. So multiple teams on the spot. Back to you. Okay, all right. Priyank, we continue coming back to you for those updates. Mohit Om is also joining us from the spot. Mohit, we are told that the call was made at about 7:47 a.m. in the morning. The police officials received a call, but there has been some significant damage to the walls as well. What is it you're picking up on the ground? देखिए, अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो इस वक्त जांच टीम जो है वो मौके पर है। स्पेशल सेल को यहां पे कॉल किया गया है। स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी आरपी उपाध्याय इस वक्त मौके पर है और जो पूरे मौके का मुआयना कर रहे हैं। उनके साथ एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा, जिनको एक्सपर्ट माना जाता है इस तरीके की गतिविधियों का, वो यहाँ पर इस वक्त मौके पर है। उसके अलावा 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर है। सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं उनको मौके पर बुलाया गया है और स्कूल के अंदर भी जांच की जा रही है। स्कूल के आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को एक स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है ऐसी संदिग्ध वस्तु यहाँ पर कैसे आई और कौन वो शख्स था उसको यहां पर लेकर आया। हालांकि अब ये पुलिस का कहना है कि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था, क्योंकि इसका जो असर है वो सामने करीब 100 मीटर तक गया है और यहां पे आसपास की दुकान जो है उनके आपको नेम बोर्ड टूटे हुए नजर आएंगे। जो बिल्डिंग्स है वहां पे आपको शीशे टूटे हुए नजर आएंगे। आसपास की जो गाड़ियां खड़ी थी उनके कांच टूटे हैं यहां पर। यानी हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है। और यहां पे राहत की बात यह है कि कोई जान की हानि नहीं हुई, क्योंकि जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था उस वक्त ये रोड खाली थे, दुकान बंद थी, संडे का दिन है, स्कूल आज बंद था। लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है कहीं ना कहीं उस अलर्ट को सही साबित करता हुआ नजर आ रहा है, जो लगातार दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज को मिल रहा था कि दिवाली से पहले दिल्ली के अंदर कोई ऐसी गतिविधि हो सकती है जिससे अशांति फैले। और कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट जिस तरीके से हुआ है उस तरफ इशारा कर रहा है कि जो अलर्ट दिल्ली पुलिस को मिल रहे थे वो अलर्ट कहीं ना कहीं सही अलर्ट थे कि इस तरह की गतिविधि कहीं हो सकती है। हालांकि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर अब सुरक्षा को और कड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त फेस्टिवल सीजन चल रहा है और मार्केट एरियाज के अंदर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी आला अधिकारी हैं वो दूसरी जगह पे पहुंच रहे हैं। पूरे इलाके को जो मुआयना किया जा रहा है, एक्सपर्ट टीम्स को बिठाया गया है सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए। इसके अलावा एनएसजी को यहां पे कॉल किया गया है, स्पेशल सेल की टीम यहां पहुंच चुकी है। तो पूरी जांच जो है वो काफी तेजी के साथ की जा रही है। मैं आपको उस जगह दिखाना चाहूं जहां पे ब्लास्ट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि एफएसएल की टीम और स्पेशल सेल की टीम मौके पर है। यहां पे उस जगह को लगातार वेरीफाई कर रही है जहां पे ये ब्लास्ट हुआ था। यहीं से धुआं उठता हुआ नजर आया है। एक सफेद
सफेद पाउडर जो है वो यहाँ पर नजर आया है। अगर कैमरामैन दिखाना चाहे तो क्रैक यहाँ पे देखने को मिलेगा जो सीआरपीएफ स्कूल की वॉल पर है, जिसको लगातार यहाँ पर जिसकी मैपिंग की जा रही है। सीएफएसएल की जो एफएसएल की टीम है वो मौके पर है, स्पेशल सेल की टीम मौके पर है। तो यानी अब जांच काफी तेज की जा रही है। आसपास के जो शॉप्स है वहां पे जो लगे सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी फुटेज को लगातार खंगाला जा रहा है। लेकिन अगर आप विजुअल देख सके तो सीधा जो सामने दुकानें हैं, ठीक इस वॉल के ठीक सामने दुकानें, सबके नेम बोर्ड जो है वो यहाँ पे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। जो सामने बिल्डिंग है उसके ग्लास आपको टूटे हुए नजर आएंगे। तो हाई इंटेंसिटी जो ब्लास्ट था, जिसको दिल्ली पुलिस का कहना है कि काफी तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ है। और जो लोग हैं यहाँ पे, जो आसपास के रेजिडेंशियल एरिया है वो काफी दूर नहीं है, बिल्कुल स्कूल के ठीक सामने रेजिडेंशियल एरिया है। जब ब्लास्ट हुआ तो यहाँ के लोग बाहर निकले। उनका कहना है कि यहाँ पे बहुत तेज उनको आवाज आई थी, ना सिर्फ आवाज बल्कि धुआं उठता हुआ नजर आया था। और उसके साथ जब वो आए तो हवा में उनको गंध भी महसूस हुई। यानी एक ज्वलनशील पदार्थ था। जिस तरीके से यहाँ ब्लास्ट हुआ है, अब ब्लास्ट किस चीज में हुआ है, कोई एक्सटर्नल चीज यहाँ पे लाके रखी गई है, उसकी फिलहाल यहाँ पे जांच की जा रही है। लेकिन अब जांच टीम मौके पर है, तमाम आला अधिकारी मौके पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके का ब्लास्ट है वो कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि फेस्टिव सीजन दिल्ली में इस वक्त है और बाजारों के अंदर भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। अगर ये ब्लास्ट किसी ऐसी जगह पर हुआ होता तो काफी बड़ी हानि हो सकती थी। फिलहाल राहत की बात यह है कि कोई जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन इस ब्लास्ट को लेकर अब जांच काफी तेज की गई है। जी, okay, all right. So looking at the CCTV footage around the area, and like you mentioned, this was close to the CRPF school and the walls have been damaged. Thankfully it's a Sunday, but Sunday would also mean that several market areas are going to be very crowded, and it's a high intensity blast because of the impact that it has had up to 100 meters around. And there are several shops and residences in the area as well, which is a cause of concern, has caused some panic as well. Mohit, you're also showing us that a lot of police officials have also reached the spot. But since it's the festive season, since there are going to be several crowded areas, any word on whether security is also being heightened in other parts of Delhi? What are the measures that the police officials are taking? देखिए, इस ब्लास्ट के बाद पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर डाला गया है। जो खासकर से बाजार वाले इलाके हैं, जो बड़े बाजार हैं, जहां पे इस वक्त काफी बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है, जो लगातार वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं, वहां पे इस वक्त हाई अलर्ट किया गया है। और जो पूरी गहन जांच के बाद ही अब जो वाहन है या लोग हैं उनको बड़े बाजारों के अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके का ये ब्लास्ट हुआ है, जहां पे इस वक्त मौके पर हम हैं, इसने कहीं ना कहीं दिल्ली को एक दहशत में जरूर डाला है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ ब्लास्ट हुआ, धुआं उठा, आवाजें आई, यहाँ के लोग जो है आसपास के वो दहशत में आए हैं। उनका कहना है कि ये हमने पहली बार इस तरीके का धमाका सुना है। क्योंकि जब धमाका हुआ है तो आसपास के रेजिडेंशियल एरियाज के लोग जो है वो बाहर निकल कर आए हैं। जो शॉपकीपर थे उनको कॉल करके बुलाया गया है कि आपकी शॉप के बाहर काफी बड़ा धमाका हुआ है। जब शॉपकीपर यहां पर आए हैं तो उनके ना सिर्फ नेम बोर्ड गिरे हैं बल्कि अंदर का सामान भी गिरा है। तो फिलहाल आप देखिए, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर है और पूरे एरिया को जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे एरिया को जो है वो यहाँ पे उनकी जांच की जा रही है, खंगाला जा रहा है कि आसपास अभी और कोई संदिग्ध वस्तु तो यहाँ पे ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें इस तरीके की कोई वारदात जिससे हो सके। तो फिलहाल यहाँ पर अब पूरे एरिया को यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया गया है। स्पेशल सेल की टीम ने पूरे एरिया को अब अपने अंडर ले लिया है। उसके अलावा 150 पुलिसकर्मी वो भी आपको नजर आ रहे हैं और सीआरपीएफ के अधिकारी भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो स्कूल के आसपास जो पूरा एरिया है उसको भी अब खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है। और लेकिन ये अलर्ट है पूरी दिल्ली के लिए, क्योंकि इस वक्त फेस्टिव सीजन में सबसे बड़ी सुरक्षा दिल्ली के उन बाजारों की है जहां पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त पहुंच रहे हैं। और उसको लेकर लगातार ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि खुफिया एजेंसीज को अलर्ट मिल रहा था कि दिल्ली में किसी तरीके की ऐसी कोई वारदात हो सकती है। और उस अलर्ट को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी अलर्ट थी। लगातार हम देख रहे थे कि बाजारों में चौकसी बढ़ाई गई है। खुद आला अधिकारी मौके पर पेट्रोलिंग करते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन एक ये कहीं ना कहीं जो ब्लास्ट हुआ है ये आई ओपनर है दिल्ली पुलिस के लिए कि अभी भी सुरक्षा पूरी तरीके से पुख्ता नहीं है। क्योंकि इस तरीके की घटना अगर एक रिहायशी इलाके के पास हो सकती है तो बड़े बाजारों में भी हो सकती है। और उसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस को अलर्ट दिए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी लगातार इस चीज को लेकर बैठकें भी कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे। लेकिन ये ब्लास्ट कहीं ना कहीं एक सुरक्षा पे सवाल जरूर खड़े कर रहा है। तो फिलहाल इसको हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट बताया गया है क्योंकि इसका जो असर है वो काफी दूर तक देखने को मिला है। करीब 100 से 200 मीटर के एरिया में जो है वो डैमेज इसके देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल अब आला अधिकारी मौके पर है और जांच तेज की जा रही है। जी, okay, all right. Mohit, request you to stay with us. Viewers, you're seeing the visuals on the screens on one side after the call was made.
Just before 8 a.m. this morning, thick plumes of smoke were seen in the air. This is close to the CRPF school. And now the police officials are currently at the spot and are investigating on what is the cause. They're looking at the fact that it had an impact up to 100 meters around the place of the blast. Priyank Tripathi also continues to stay live with us. Priyank, initially there was a suspicion that it could be a crude bomb. What is it that the police officials are picking up? Ali Mohit was also reporting from the spot, Pratibha, because the manner in which the impact has been seen 40 feet away from the location, which is the wall adjacent to the CRPF. If Mohit can show once again the visuals, it's quite clearly seen that the wall was approximately 40 feet away from the main location, and the impact was seen on the other side of the carriageway. Thankfully, it was early in the morning. Otherwise, this is considered to be a very busy market area of Prashant Vyas, which is in Sector 14 of Rohini, where many passerbys and many people would have come because of the festive season, which is right now going on in the country. So this blast happened. The main point which we are trying to get to know that whether there could have been some timer device which was also found from the location. That will be certain once the police official will be able to clear more doubt about it. The fact of the matter is that this is a blast which has happened right opposite to a very busy market area. You can clearly see in the visuals that there are big prominent shops, eateries, joints, and big shopping area which is right opposite to the location. God forbid if this could have happened just a few hours after the time of the explosion, which was 7:40 in the morning, then certainly there could have been a major casualty which could not be denied. If you look at the impact was certainly much more than what we saw in the cafe blast which had happened in Bangalore, and this impact is clearly showing that many people would have got injured. Right now, what we are getting to know that the FSL team have found white color chemical from the location, which is suggestive about the fact that this could have been a crude bomb. But senior officials are still waiting and awaiting the response of the NSG's BDS team, which will clear the more doubt about the kind of material which was made for the making this suspected crude bomb. Determining the cause of the explosion, and the NSG bomb squad also being called in at this